ओके क्लास, यहाँ पे हम जो है वाबा फाइनेंस की जो रिमेनिंग डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 6 में। जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन शेयर द स्लाइड विद यू पीपल। Sell and purchase a commodity in future. फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, द इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइंट प्रॉमिस टू सेल एंड परचेज। आपस में उन्होंने डिसाइड करा कि हम इंस्टीट्यूशन सेल करेगा और जो है क्लाइंट बाय करेगा कमोडिटी इन फ्यूचर। दिस इज नॉट एन एक्चुअल सेल, तब तक वो को एक्चुअल सेल में नहीं गए। इट इज जस्ट अ प्रॉमिस टू इफेक्ट द सेल इन फ्यूचर on our basis. Thus, at this stage, the relation between the institution and the client is that of a promisor and promisee. जब तक वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, जस्ट प्रॉमिस और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की कंडीशन में गए हैं, आपने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करा है, जस्ट आप जो है एक्चुअल ट्रांजैक्शन अगर वहां पे अभी नहीं हुई। At the second stage, the relationship between the party is that a principal and agent. आ, पहले हमने कहा कि जो ये क्यों कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है कि हर पॉइंट पे जो दोनों पार्टीज हैं उन वो डिफरेंट कैपेसिटी के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में होती हैं। डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। स्टार्ट में जो है फर्स्ट फेज में हमने कहा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, एक चीज को सेल करने का प्रॉमिस कर रहा है, एक चीज को बाय करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का जो है रिलेशनशिप हुआ। सेकंड फेज पे एट द सेकंड स्टेज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर वो कहता है कि मेरे बिहाफ पे अगर जो है आप बाय करें, तो वो फिर प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप हो जाएगा। क्लाइंट एज एजेंट और फाइनेंसर जो है एज अ प्रिंसिपल जो है वो वर्क कर रहा होगा वहां पे। एट द थर्ड स्टेज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द सप्लायर इज दैट ऑफ ए बायर एंड सेलर। और थर्ड स्टेज पे बायर और सेलर का वो रिलेशनशिप बन जाएगा। और फोर्थ पे क्या होगा, फोर्थ रिलेशनशिप बायर एंड सेलर कम इनटू द ऑपरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइंट एंड द सिंस the sale is affected on the deferred payment basis, the relationship of debtor and creditor। उस केस में फिर आपका डेटर क्रेडिटर का हो जाएगा। आपने चीज उसको सेल आउट कर दी, आपने एक ने जो है वो एक की तरफ अकाउंट रिसीवेबल होगा, दूसरे की तरफ अकाउंट पेएबल होगा। एक ने पैसा जो है रिसीव करना है, दूसरे ने देना है, तो वहां पे रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि विद इन रबर ट्रांजेक्शन देयर आर डिफरेंट फेजेस जहाँ पे जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी में ये दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉमिसर टू प्रॉमिसी, secondly principal to agent, thirdly buyer and seller, and fourthly debtor and creditor। तो ये डिफरेंट कैपेसिटी में एक दूसरे के साथ जो है वहां पे लिंक कर रही होती हैं। नंबर 11 we have the institution may ask the client to furnish a security to his satisfaction for the prompt payment of the deferred prices। He may also ask him to sign a promissory note or bill of exchange, but it must be after the actual sale take place। अब हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन में आस्क क्लाइंट, क्लाइंट को वो कह सकता है कि आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, लेकिन आप
कि आपके एंड पे अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दें, प्रॉमिसरी नोट इशू कर दें कि आप फ्यूचर में जो हमें पेमेंट करेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं बट इट मस्ट बी आफ्टर द एक्चुअल से, तो ये आफ्टर एक्चुअल से जो है वो पॉसिबल है। द फिफ्थ स्टेज मेंशन अब जो अब मेंशन फिफ्थ स्टेज है, जब पोजेशन जो है वो क्लाइंट के पास आ जाती है, उसके बाद ये जो है अलाउ है। The reason is that promissory note is signed by a debtor in favor of his creditor, but the relationship of debtor and creditor between the institution and client began only at the fifth stage. तो ये जो है फिफ्थ स्टेज के बाद जब डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होगा तभी ये चीज हो सकती है, उससे पहले जो है ये वो चीज जो है वो नहीं हो सकती। whereupon the actual sale take place between them, जब भी एक्चुअल सेल उन दोनों के बीच होगी तो तब बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का जो है वो सिनारियो जो है वो आ सकता है। In the case of number 12, we have in the case of default by the buyer in the payment of the prices at the due date, the price cannot be increased. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर डिफॉल्ट कर जाता है, बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा टाइम पे, तो प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज। जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है, अदर फाइनेंशियल सिस्टम में जो फॉलो की जाती है, अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो है, इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। ऑन द कॉन्ट्रे वी हैव मुतालबा में जो हमारे पास कंडीशन है कि आप प्राइस जो वंस डिसाइड हो गई, वो प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं की जा सकती। यू कैन रियलाइज कि आप जो है वो पेमेंट करें बायर को, और अदरवाइज जो है वो पेमेंट जो है वो इंक्रीज नहीं की जा सकेगी। However, if he has undertaken in the agreement to pay an amount for a charitable purpose, अगर वो एग्रीमेंट में उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि अगर आप बाय नहीं कर सकेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज की गई अमाउंट जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जाएगी, तब जो है वो अलाउ है। लेकिन जो है फाइनेंसर की इनकम में जो है वो फर्दर जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस इनकम का। As mentioned in para 7 of the rules of bare merger, he shall be liable to pay the amount undertaken by him, but the amount so recovered from the buyer shall not form part of the income of the seller or the financer. He is bound to spend it for a charitable purpose on behalf of the buyer. As will be explained later in the detail जो है हम इसको देखेंगे भी। ओके, यहाँ तक जो है हमने ये 12 पॉइंट जो डिस्कस करे, आई वुड लाइक कि आप लोगों को एक हल्का सा रिकैप भी इसका मैं दे दूं। बेसिक जो फीचर हैं हमारे पास अब फाइनेंसिंग के, जब भी हम डेफर्ड प्राइसिंग पे जाते हैं, फ्यूचर में उसकी पेमेंट है, तो को हमने कहा एज मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो हमने कहा कि सर्टेन कंडीशन के साथ जो है उसको यूज़ करना चाहिए। तो उसके कुछ बेसिक फीचर हमने डिस्कस करे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप इसको आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किए होंगे। आप जो है इन 12 पॉइंट को रीड आउट कीजिएगा। एज पर डिस्कशन जो है आप लोगों को ये समझ आ रहे होंगे। अगर ये इनमें से कोई पॉइंट अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, आप अभी पूछ सकते हैं, या फर्दर जब भी आप रीड आउट कर रहे हो वीडियो के नीचे कमेंट करें कभी भी। हम नेक्स्ट सेशन से पहले इसको देख लेंगे। Now we talk about some issues involved in Maraba. So far, the basic concept of the Maraba जो है अभी हमने explain करा है. Now it is proposed to discuss some relevant issues with reference to the underlying Islamic principle and their practical applicability in the Maraba transaction, because without a correct understanding of these issues, the concept may remain ambiguous and its practical application may be susceptible to the error or misconception. Uh, कुछ जो इश्यूज इसमें हैं, एक तो इसको आमतौर पे अगर लिया जाता है, अगर लेमैन की अगर बात करें तो वो इसको एज सिमिलर टू द इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग ही कंसीडर करता है, जहाँ पे जो है आप कितने इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट को ऐड करके या उस तरह की जो है कुछ कुछ मिसकंसेप्शन जो है हमें नजर आती हैं। अगर हम कुछ पॉइंट को इनमें में कुछ पॉइंट्स को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं तो हमें जो वो इश्यूज हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं,
जो सस्पेक्टेबल टू एरर्स हैं वो हम जो है उनको जो है कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं, अगर हम हमें ये पॉइंट जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। नंबर वन हमारे पास है डिफरेंट प्राइसिंग फॉर कैश एंड क्रेडिट से। प्राइस कुड बी डिफरेंट। जो अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो तो प्राइस डिफरेंट हो सकती है। अगर क्रेडिट सेल पे जाते हो तो प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उस केस में जो है नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है, अगर आप दोनों टाइम पीरियड में प्राइस सेम नहीं होगी तो उसको इंटरेस्ट के एस्पेक्ट में लिया जाता है कि वो पेमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है इंक्रीज। तो जो भी प्राइस है, अगर आप ऑन द स्पॉट प्राइस सपोज 100 है, 100 उसमें 90 प्लस 10 प्रॉफिट है, तो अगर आप 90 प्लस 20 कर दें फॉर डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर के लिए, और वो आप स्टार्ट में बता दें कि 90-20 मेरा प्रॉफिट होगा, 90 मेरी कॉस्ट है, और क्लाइंट जो है बायर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो इस अलाउ ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है उस केस में। अगर आप फ्यूचर में डिसाइड करते हैं प्राइस को शफरिंग के साथ बार बार चेंज कर रहे हो, पेमेंट ना आ रही हो तो प्राइस इंक्रीज करें, दिस पर्टिकुलर एक्शन इज नॉट अलाउड। So, first and foremost question about the Muraba is that when used as a mode of financing, it is always affected on the basis of deferred payment। जब भी हम बात करेंगे Muraba फाइनेंसिंग की तो deferred payment की बेस पे ही होगा। The financer purchases the commodity on cash payment and sell it to the client on credit।
होगा, 90 मेरी कॉस्ट है, और क्लाइंट जो है, बायर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, तो इस अलाउ, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है उस केस में। अगर आप फ्यूचर में डिसाइड करते हैं प्राइस को शफिंग के साथ बार बार चेंज कर रहे हो, पेमेंट ना आ रही हो तो प्राइस इंक्रीज कर, दिस पर्टिकुलर एक्शन इज नॉट अलाउड. So, first and foremost question about the Muraba is that when used as a mode of financing, it is always affected on the basis of deferred payment. जब भी हम बात करेंगे Muraba financing की, तो deferred payment की बेस पे ही होगा. The financer purchases the commodity on cash payment and sell it to the client on credit. अब आपने कैश पे जो है फाइनेंसर ने वो चीज़ बाय करी और सेल कर दी क्लाइंट को ऑन क्रेडिट डेफर्ड पेमेंट के साथ. While selling the commodity on credit, he takes into account the period in which the price is to be paid by the client and increase the price accordingly. The longer the maturity of the Maraba payment, the higher the price. जितना सा लंबी पेमेंट पीरियड होंगे उतनी ही ज़्यादा वो प्राइस इंक्रीज करेगा. Therefore, the price in a Maraba transaction as practiced by the Islamic bank is always higher than the market price. If the client is able to purchase the same commodity from the market on cash payment, he will have to pay much less than he has to pay in the Maraba transaction on deferred payment basis. तो यही वजह है कि जब क्लाइंट अगर मार्केट से कंपेयर करेगा तो मार्केट में वो चीज़ कम पैसों में मिल रही होगी, यहाँ पे जो है बराबर ट्रांजेक्शन वो ज़्यादा पे होगी क्योंकि वो जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे जा रहा है. तो ये जो है द क्वेश्चन अराइजेस एज द वेदर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन अ क्रेडिट सेल मे बी इंक्रीज फ्रॉम द प्राइस ऑफ द कैश सेल. Some people argue that the increase of the price in a credit sale being in the consideration of the time given to the purchaser should be ट्रीटेड एनालॉजीज टू द इंटरेस्ट. कुछ लोग कहते हैं कि ये जस्ट लाइक इंटरेस्ट, जैसे ही आप टाइम इंक्रीज करते जाते हो आप ज़्यादा कॉस्ट प्रॉफिट जो है वो चार्ज कर सकते हो. तो ये तो वो इंटरेस्ट वाली ही बात हुई. Because in the both cases, an additional amount is charged on the deferred payment. On the basis of this, argue that the Maraba transaction, as practiced in the Islamic bank, are not different in the sense of from the interest-based loan advanced by the conventional bank. This argument, which seem to be logical in appearance, ये argument जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत logical भी लगता है, is based on the misunderstanding about the principle of the Sharia regarding the prohibition of the riba. Prohibition of riba is somehow different अगर हम इसको understand कर सकें. For the correct comprehension of this concept of the following point must be kept in view. Uh, the modern capitalist theory does not differentiate between money and commodity. Insofar a commercial transaction are concerned, in matter of exchange, money and commodity both are treated at par. Uh, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो कि इसमें डिफरेंस क्या है, फिर अगर डेफर्ड में कन्वेंशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उसका और मुराबा बेस्ड फाइनेंसिंग जो है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम जो है फर्दर डिस्कशन में अभी कंक्लूड कर लेते हैं. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है, डेवलप किया जाता है आर्गुमेंट के डिफरेंट प्राइसेस फॉर कैश एंड क्रेडिट सेल्स जो है ये कहीं ना कहीं मुराबा को सिमिलर कर देती है टुवर्ड इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग. तो अगर हम इसमें बेसिक डिफरेंशिएट करें मुराबा को और जो कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है या लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही होती हैं, कैसे ये उससे डिफर करता है, तो हमें इसमें एक दो पॉइंट जो है वो देखने होंगे. This argument, which seems to be logical in appearance, is based on a misunderstanding about the principle of Sharia regarding the prohibition of riba. For the correct comprehension of the concept, the following point must be kept in view. हमें ये points जो हैं वो समझने होंगे. The modern capitalist theory does not differentiate between money and commodity insofar as commercial transactions are concerned. In matter of exchange, money and commodity both are treated at par.
both can be traded in, both can be sold at whatever price the prices agree upon. Once one can sell $1 for $2 on the other hand, has $2. The only condition is that it should be फाइनेंशियल सिस्टम की बात प्रीवियसली जो नॉन इस्लामिक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कमोडिटी को और जो है मनी को जो है वो इक्वल कंसीडर किया जाता, इक्वल इन अ सेंस कि वो बोथ जो हैं कमोडिटी भी और मनी भी ट्रेड की जा सकती हैं, बोथ जो है किसी भी प्राइस पे वो सेल आउट की जा सकती हैं। $1 है, एक 1 रुपी है, तो वो किसी भी प्राइस पे जो है सेल आउट किया जा सकता है। सपोज इफ यू आर गिविंग अ लोन of ₹100 or $100 to any person, you can demand more than 100 in future. तो आप क्या है, अगर इसमें जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अगर म्यूचुअली दोनों पार्टीज में कॉन्सेंट पाई जाती है, दोनों पार्टीज अग्री हैं, तो मनी को और कमोडिटी को दोनों पे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करी जा सकती है। अ, जब हम इस्लामिक सिस्टम की तरफ देखते हैं तो इस्लामिक सिस्टम में हमें वहाँ पे मिलता है कि मनी और कमोडिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। कमोडिटी जो है उसको ट्रेड किया जा सकता है, उसको जो है सोल्ड किया जा सकता है ऑन अग्रीड प्राइस, जो भी कॉन्सेंट होगी दोनों पार्टीज की, उस पे जो है प्रॉफिट जो है वो चार्ज किया जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड मनी इज जस्ट medium of exchange. It's don't it doesn't have any value. तो जब कमोडिटी और मनी दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी डेफिनेशन देखते हैं, कैपिटलिस्ट थ्योरी जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट थ्योरी है या नॉन इस्लामिक सिस्टम में जो मनी की डेफिनेशन है वो कमोडिटी के साथ मिक्स हुई हुई है, ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है। लेकिन इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, the Islamic principle, however, do not subscribe this theory. Uh, According to the Islamic principle, money and commodity have different characteristics and therefore they are treated differently. The basic point of difference between money and commodity are following. तो इस्लामिक सिस्टम की रोशनी में हम देखते हैं कि मनी और कमोडिटी में दे आर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं जिनकी बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। मनी हैज नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी, मनी की अगेंस्ट आपको कोई इंट्रिंसिक यूटिलिटी जो है वो नहीं मिल, मनी इटसेल्फ कोई जो है यूटिलिटी जो या वैल्यू नहीं रखती until unless we cannot convert it into the any of the other commodity. It cannot be utilized for fulfilling human need directly वो है यूज नहीं की जा सकती। It can only be used for acquiring some goods or services. The commodities, on the other hand, have intrinsic utility. They can be utilized directly without exchanging them for some other thing. तो नंबर वन तो क्या हुआ, इंट्रिंसिक यूटिलिटी। आप डायरेक्टली जो है मनी को यूज नहीं कर सकते unless you would change it or exchange it in any of the commodity or services or goods जिसको आप यूज कर सकें। ऑन द अदर हैंड साइड कमोडिटी जो है उसकी इंट्रिंसिक यूटिलिटी है, आप उसको डायरेक्टली जो है किसी भी कमोडिटी को यूज कर सकते हैं, उससे बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो नंबर वन डिफरेंस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। Number two, we have the commodity can be different qualities, while money has no quality except that it is a measure of value or a medium of exchange. कमोडिटी कैन बी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज वाइल अब कमोडिटी की अगर बात करें वो उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। एक ही अगर चीज है तो उसमें आपको डिफरेंट तरह की क्वालिटीज मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी चीज में जाके देखें, अगर सपोज आप टेक्सटाइल में देखते हैं
या आप और इंडस्ट्री में देखते हैं तो आपको विद इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको डिफरेंट रेंज ऑफ कमोडिटी मिल जाएगी, किसी की क्वालिटी अच्छी होगी, किसी की कम, किसी की क्वालिटी जो है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जा रही होंगी। अ, लेकिन आप जब मनी को देखेंगे तो मनी अगर 100 रुपीज का नोट है या आपके पास जो है वो $1 है, $100 है आपके पास, तो और जितने भी बाकी के 100 या सेम अमाउंट की जो वैल्यू होगी करेंसी होगी, उनकी वर्थ सेम होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो देयरफॉर आर द equal to each other. An odd and dirty note of 1,000 has the same value as a brand new note of 1,000. Unlike the old and used car, may be much less in value than a brand new. तो एक नया नोट और पुराना नोट, उन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर होती है, जबकि एक नई कार या पुरानी कार की अगर बात करें तो उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो नंबर वन, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती मनी की। नंबर टू जो है, इसमें जो है वो कोई क्वालिटी नहीं होती जिसकी बेस पे जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। विद इन कमोडिटी तो हमें डिफरेंट क्वालिटीज मिलती हैं, अगर ओल्ड है, न्यू है, कुछ फीचर ऐड हुए हैं तो उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। बट एन an old note of 1,000, and dirty note of 1,000, and new note of 1,000 are equal। तो जब वो तमाम इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि मनी जो है जस्ट अ पीस पेपर, और उसकी वैल्यू जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ जो है डिफरेंट होगी, उस पे आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, कुछ पे नहीं कर सकते। तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये सामने आ जाता है। नंबर थ्री जो है, सी पॉइंट हमारे पास ये है, इन कमोडिटीज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज इज अफेक्टेड on particular individual commodity, or at least on the commodities having particular specification. If A has a particular car, by pinpointing it and seller has agreed he deserves to receive the same car, the seller cannot compel him to take the delivery of another car of the same type or quality. This can only be done if the purchaser agree to, which implies that the earlier transaction is cancelled and new transaction on the new car is affected by the mutual consent। अगर हम अगर बायर जो कहता है कि मुझे सपोज वो कोई कार परचेज करना चाह रहा है, और अगर वो कार पिन पॉइंट कर दे कि मुझे यही ब्रांड चाहिए, यही वाली कार चाहिए, यही कार अगर मुझे सेल आउट की जाएगी तो मैं आपको जो है एक सर्टेन पेमेंट कर दूंगा, जो आपकी डिमांड है रिक्वायर्ड उसके अकॉर्डिंग। अब जब तक वो डिज़ायर कार या डिज़ायर मॉडल जो है वो उस परचेज़र को, बायर को नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सेल जो है या ये ट्रांज़ैक्शन जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकेगी। अगर हम कहते हैं कि वो वाला मॉडल नहीं है या कोई और मॉडल उसकी जगह आ सकता है, तो बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट क्वालिटी होने की वजह से जो है उसकी करनी होगी। ये जितनी भी डिस्कशन है हम कमोडिटी के लिहाज से कर रहे हैं। कमोडिटी में जो है आपके पास जिस चीज़ को पिन पॉइंट करते हो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वही कमोडिटी चाहिए, तो उस बेस पे। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड मनी को लें, मनी को यहाँ से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप कोई भी नोट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि मुझे यही वाला नोट वापस चाहिए होगा। आप कोई भी करेंसी को जो है वो पिन पॉइंट नहीं कर, एवरी currency, whatever the currency serial number or whatever the currency condition, because all having the same value, तो उसकी बेस है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, मनी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड। ठीक है, मनी जो है वो पिन पॉइंट नहीं की जा सकती इन ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज। इफ ए हैज परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम बी, इट इज showing him a pot of 1,000,
he can still pay him another note of the same denomination. तो वो जरूरी नहीं है कि वही वाला 1000 नोट जो है वो पे करे, or not because of having the same worth. While B cannot insist that he will take the same note as was shown to him. Keeping these differences in view, Islam has treated the money and commodity differently. Since money has no intrinsic utility, but is only a medium of exchange which has no different qualities, the exchange of unit of money for another unit of same denomination cannot be effected except at par value. If the currency note of 1000 is exchanged for another note of rupee 1000, it must be of the value 1000. The price of the former note can neither be increased nor decreased, even in a spot transaction, because the currency note has no intrinsic utility nor a different quality. Therefore, any excess on either side is without consideration, hence not allowed in Sharia. बिकॉज़ के करेंसी जो है उसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, उसकी बेस पे जो है वो आप जो है उसको एज़ अ कमोडिटी के तौर पे जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते, उस पे जो है आप बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो ये जो है देयर द एक्सेस, कोई भी एक्सेस ऑन आइदर साइड विदाउट कंसिडरेशन हैज़ नॉट अलाउड इन शरिया। तो अब शरिया में ये तमाम चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं की जाती। As this is true in spot exchange transaction, it is also true in the credit transaction where there is the money on both sides because of some excess is claimed in a credit transaction. ना सिर्फ on the spot मनी के एक्सचेंज पे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चार्ज की जा सकती, रादर कि आप अगर क्रेडिट पे भी अगर बाद में भी जो है वो रिसीव कर रहे हैं तब भी जो है उसको जो है एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा जो अमाउंट जो है वो उस पे चार्ज नहीं की जा सकती। Because if some excess is claimed in credit transaction while money is exchanged for money, it will be against nothing but time. तो आप टाइम के अगेंस्ट जो है वो मनी जनरेट कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो हैविंग द सेम क्वालिटी, आप वही पैसा आपको बाद में मिलेगा। तो द केस ऑफ द नॉर्मल कमोडिटी इज डिफरेंट सिंस दे हैव इंट्रिंसिक यूटिलिटी। अगर हम कमोडिटी की बात करें तो उनका केस जो है वो डिफरेंट इसलिए है कि उनकी इंट्रिंसिक यूटिलिटी है, क्वालिटीज उनमें पाई जाती हैं। द ओनर इज रिटी टू सेल देम एट व्हाटएवर प्राइस, वो किसी प्राइस पे सेल कर सकता है सब्जेक्ट टू द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ऑन सप्लाई और डिमांड जो भी उसकी प्राइस सेट हुई होगी उस पर वो सेल आउट कर सकता है। इफ द सेलर डज नॉट कमिट अ फ्रॉड और मिस presentation misrepresentation, he can sell a commodity at a price higher than the market rate with the consent of the purchaser. अगर कमोडिटी है और वो मार्केट से ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करना चाह रहा है, थर्ड पार्टी जो है वो सेकंड पार्टी जो है वो जो म्यूचुअल कंसेंट एग्री है उस पे बाय करेगी तो वो परचेज कर सकता है, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड होगी। इफ द परचेजर एक्सेप्ट टू बाय इट that increased price, the excess change from him is quite formidable. How to say that when he can sell the commodity at high price in cash transaction, he can ask high price in credit sale, subject only to the condition that he neither deceive the purchaser nor compel him to purchase, and the buyer agree to pay the price with his free will. फ्री विल के साथ, फ्री कंसेंट के साथ वो किसी भी प्राइस पे अगर एग्री हैं एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करने पे और वो जो है वो अलाउ है, वैलिड है। It is something good that the increase of price in cash transaction is not based on the deferred payment. Therefore, it is permissible while in the sale based on the deferred payment, the increase in purely against time which make it analogy to us. अगर हम बात करते हैं इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम कैश पे अगर वो चीज़ लेते हैं तो डिफरेंट चार्ज की जाती है, अगर हम ऑन क्रेडिट उसको सेल आउट करते हैं तो डिफरेंट, इसीलिए वो उसकी एनालॉजी बनती है इंटरेस्ट के साथ। दिस आर्ग्यूमेंट इज अगेन बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शन that whenever price is increased, taking the time of payment into the consideration, the transaction come within the एबिट आवर्स। जब भी सिर्फ टाइम को कंसीडर करते हुए उसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो रही हो, मतलब
महीने बाद अगर वो प्राइस पेमेंट होगी तो प्राइस ये होगी, 2 महीने बाद ये होगी। सिर्फ़ टाइम को देख के, टाइम इज़ द ओनली एंड ओनली टूल जिस प्राइस डिटरमिन हो रही है, तो वो जो है वो अलाउ नहीं है। लेकिन if commodity is sold in a chain, the seller when the fixing the price may take in the consideration different factors, including the time of payment. A seller being owner of commodity which has intrinsic utility may charge a higher price, and the purchaser may agree to pay it due to the various reasons. For example, अब जब सेलर को पता है कि उसे फ्यूचर में प्राइस मिलनी है, वो किसी भी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकता है। वंस वो डिसाइड कर मुझे 100 के साथ जो है 10, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ जो है वो प्रॉफ़िट चाहिए, तो उसके बाद उस इसको क्या वो नहीं कर सकेगा। वंस जो अगर वो डिसाइड हो गई प्राइस, तो वही प्राइस जो है ओवर द टाइम जो है वही पेमेंट जो है वो उसको मिल रही होंगी। तो ये की मिलता है हमें इस्लामिक सिस्टम में। हमने डिस्कस करा कि कैसे कमोडिटी और मनी जो है वो डिफरेंट है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। उसको हमने क्या हाँ, इसी बेस पे हम देख लेते हैं जब हम बात करते हैं कि सेलर बीइंग द ओनर ऑफ कमोडिटी व्हिच हैज़ इंट्रिंसिक यूटिलिटी, ऐसी चीज़ कमोडिटी जिसकी इंट्रिंसिक यूटिलिटी है, वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। परचेज़र मे एग्री टू पे ड्यू अ, वो कर सकता है। परचेज़र जो है एग्री कर सकता है पे ड्यू टू दी वेरियस रीज़न, वो डिफरेंट रीज़न जिनकी वजह से जो है वो ये करता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कि वो क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाता है परचेज़र बायर। नंबर 1 हमारे पास है हिज शॉप इज़ नियर। हो सकता है कि उसकी शॉप जो है उसके डोरस्टेप पे हो, सबसे नज़दीक हो। हिज शॉप इज़ नियर टू द बायर हू डज़ नॉट वांट टू गो टू मार्केट व्हिच इज़ नॉट नियर और सो नियर। हो सकता है कि वो किसी और शॉप से जब बाय करता है तो उसको ट्रैवलिंग की कॉस्ट बेयर करती है, टाइम कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, ठीक है? तो उस कॉस्ट से बचने के लिए वो हो सकता है एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो जाए बायर। द से सेकंड पॉइंट, द सेलर इज़ मोस्ट वर्दी फॉर द परचेज़ अनदर। होता है कि वो सेलर जो है उसे उस पर ट्रस्ट हो कि वो जब भी एक हमें इससे प्रोडक्ट बाय करते हैं तो इट ऑलवेज़ हैविंग दिस सेट क्वालिटीज़ जो है वो क्लेम की जाती हैं, वो क्वालिटी उसमें जो है मौजूद होती हैं, तो इसीलिए उस सेलर से ही ट्रस्टवर्दी सेलर की वजह से जो है वो हमारी वजह से जो उसको पे कर सकता है। सी पॉइंट, द सेलर गिव हिम प्रायोरिटी इन सेलिंग कमोडिटी डिमांड। जब भी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो तो वो उस बायर को प्रायोरिटी बेसिस पे वो चीज़ ऑफ़र कर रहा होता है, दे रहा होता है, तो उस बेस पे भी जो है जो बायर जो है उसको हाई प्राइस पे कर सकता है। सेलर गिव हिम the fourth point, the D point, atmosphere of the shop of the sale is more comfortable than other shop. अगर कोई आप ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वहाँ पर शॉप की एनवायरनमेंट, शॉप की लोकेशन मैटर करती है, वो फिजिबल है, तो उसकी बेस पे भी ज़्यादा जो है बायर पे कर सकता है। द सेलर इज़ मोर कर्टेस इन हिज डीलिंग देन अदर। सेलर की डीलिंग का अंदाज, सेलर जो है वो चीज़ों को डील अच्छे से कर रहा है, तो उसकी बेस पे ये तमाम रीज़न्स हैं जिनकी बेस पे जो है वो हायर प्राइस जो है वो चार्ज की जा सकती है और है वो एग्री हो जाता है डिफरेंट रीज़न की वजह से एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए। So these and similar other consideration play their role in the charging a high price from the customer. In the same way, if the seller increase the price because he allow credit to his client, it is not prohibited by Sharia. Uh, Another function is that if the seller is seller is ready to pay to provide the product commodity to the buyer on agreed term and condition, and जो agreed term and condition बाई साहब में भी पे करेंगे, तो इस वन ऑफ द फैसिलिटी फॉर द बायर। तो उस वो बाकी जो पहले हमने तमाम रीज़न डिस्कस करे और ये वाले तमाम रीज़न की वजह से अगर उसको लगता है बायर को इट इज़
irritating him, वो जो है एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब एग्री है दोनों पार्टीज, ट्रांजैक्शन कमोडिटी है, intrinsic value है, having worth rather than exchange of जस्ट लाइक मन, सिर्फ उसकी क्वालिटीज जो है वो नहीं है, डिफरेंट क्वालिटीज की बेस पे। तो वो तमाम डिस्कशन के बाद जब बेनिफिट अटैच हो जाते हैं, वो तमाम बेनिफिट को देखते हुए आप जो है एक्स्ट्रा जो अमाउंट जो है वो चार्ज की जा सकती है। तमाम बेसिस की देखते हुए हम कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो निग्लेक्ट हो रही होती हैं। लेकिन इस वाले कमोडिटी बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है जिसमें हाई प्राइस चार्ज की जा सकती है, उसमें हमने देखा कि वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये अलाउ होता है। कमोडिटी का मनी में डिफरेंस था, और फिर प्रायर जो है वो डिफरेंट रीजन की वजह से एक्स्ट्रा पे करने के लिए कमोडिटी अगेंस्ट रेडी होता है। और यही वजह है कि शरिया इस चीज को जो है वो प्रॉहिबिट जो है वो नहीं करती। वी कैन डिफरेंशिएट कि क्यों जो है हम मनी को कमोडिटी के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे थे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो यही वजह है कि शरिया अलाउ किया जाता है कि आप कमोडिटी पे जो है वो डिफरेंट चार्ज कर सकते हैं अबाउट अदर पार्टी। ना there are some different discussion are written over there। अगर आप इसको डिटेल से देख रहे हैं, डिटेल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो इसी की कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर हमारे पास कुछ टाइम हो तो मैं कुछ मेन पॉइंट यहाँ से आपको डिस्कस कर देता हूँ। Put it another, since money can only be traded by you, as explained earlier, any excess claimed in credit transaction of money in exchange of money is against nothing but time। तो जब भी आप मनी के अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो इसका मतलब आप टाइम के अगेंस्ट जो है वो अर्निंग चाह रहे हैं, जो अलाउ नहीं है। ओके क्लास, यहाँ पे जो है हम अपना सेशन आज का एंड करते हैं। इसको हम नेक्स्ट से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट देखे कि कमोडिटी और इंटरेस्ट में जो है मनी और कमोडिटी में क्या डिफरेंस है, और इसको हमने कंपेयर करा इस्लामिक सिस्टम में और नॉन इस्लामिक सिस्टम जो है उन दोनों में। इन का बेसिक डिफरेंस हमने देखा। तो यहीं से जो है अपनी नेक्स्ट डिस्कशन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।